Now the next is basically called the equilibrium constant, and it is represented by Kc. Equilibrium constant. This is something like the A level this stuff जो आपने आज से पहले नहीं किया. Previous part सारा आप O levels में भी कहीं ना कहीं discuss करके आए. This is represented by either Kc or Kp. ठीक है? If it is represented, if we talk about the equilibrium constant in terms of concentration, then it is called Kc. And in terms of pressure, it is called Kp. ठीक है? The concept of Kc is for liquids and gases. ये दोनों के लिए valid है. ठीक है? चाहे आपके पास liquid हो, चाहे आपके पास gases हो. The concept of Kc is for both liquid and gases. Let's suppose we have a chemical reaction in which A in a liquid form, 2 moles of A, reacting with B in a liquid form, forming 2C in a liquid form plus D in a liquid form. ठीक है? Clear? For this reversible reaction, एक बात तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि इन केमिस्ट्री स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है जनाब, दिस मींस कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है? स्क्वायर ब्रैकेट मींस कॉन्सेंट्रेशन. And usually the concentration is measured in terms of mole per decimeter cube. Okay, the square bracket means concentration in mole per dm cube. So for Kc हम ख्याल रखेंगे कि we use a term of concentration. Okay, can I say that the concentration of products, ठीक है, is directly proportional to the concentration of reactant. जितनी ज्यादा आपके पास reactant होंगे उतने ज्यादा product. If I remove this directly proportional sign, I have to place some sort of a constant. So is equals to के साथ मैंने constant लगाया, and this constant is basically called Kc. So the Kc is basically the concentration of product divided by the concentration of reactant. ठीक है? Kc is always concentration of product divided by the concentration of reactant. लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आ रहा है. प्रॉब्लम ये आ रहा है कि while writing down this expression of Kc, I didn't consider this stoichiometric ratio or the molar ratio of a balanced chemical equation. मैंने इसे कंसिडर नहीं किया ना. ठीक है? सो हम करते ये हैं कि we basically make the coefficient of these reactant as the power. ठीक है? तो 2 किन किन के साथ लगा हुआ था? C के साथ 2 था, 2. If it would be 3 तो मैं पावर लगा देता 3. ठीक है ना? So in terms of concentration, Kc में the product over reactant होता है and the coefficient become power. Clear? So अगर यहाँ पर 2A plus B लिखा हुआ था forming C plus D, so अगर मैं सिर्फ A की concentration लिखूंगा, this is called concentration. लेकिन अगर मैं coefficient को, if I make it a power, it is called concentration term. इसको हम कहते हैं concentration term. Means we also considering a balanced chemical equation. हम उसे भी consider कर रहे हैं. ठीक है? So this is called a concentration term. तो आसान अल्फाज में if I give you an expression, एक chemical equation देते हैं, and if I ask you to write down the expression of Kc, तो आप क्या करोगे? Concentration of product का multiple divided by reactant and the coefficient become powers. ठीक है? Now, do you think that the Kc has a same unit for all equations? सोचो. Expression of Kc depend on the stoichiometric ratio. कुछ equations में power 2 होगी ऊपर, कुछ में नीचे 1 होगी. It means that every time we have to calculate the unit of Kc.
हर बार हमें यूनिट कैंसिलेशन करके हर इक्वेशन का अलग होगा, हमें केसी का यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ केसी इन दिस वन। ठीक है, द यूनिट ऑफ केसी, and every time for every expression you have to calculate the unit of kc. So kc is equals to concentration of c, मतलब it is mole per dm cube का square multiply by mole per dm cube for d divided by mole per dm cube का square for a and mole per dm cube for this one. And by chance in this case, all mole per dm cube are getting cancelled out. So can I say that in this case, Kc has no unit? Clear? Kc has no unit. If mole ratio is same on either side of equation, the unit get cancelled out and Kc has no unit. ठीक है, और ये हमेशा होगा। आप बस ये देखेंगे दोनों तरफ 2 moles हैं, get the unit cancelled out and Kc should have no unit. Then beta, now let's practice this one. As I said, you can write down the Kc for an equation in which all liquids are present, or for the equation in which all gases are present. Okay, so can you write down the expression of Kc for this formation of ammonia wali equation? Sorry, yeah, for this equation. Kc is product over reactant, concentration of product divided by the concentration of reactants. ठीक है, so Kc, concentration of NH3 gas का square divided by concentration of N2 gas into concentration of H2 gas का cube. Agreed? ठीक है, मेक श्योर देखो, अगर आप में से किसी ने इसको इस तरह लिख दिया NH3 का स्क्वायर, it's going to be 0 mark. It has to be a square bracket because in chemistry square bracket का मतलब होता है concentration, और Kc in terms of concentration in terms of square bracket ही लिखा जाता है. And what should be the unit बेटा? So this is mole per dm cube. Unit cancellation में आप कोई भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। चले हम स्क्वायर ब्रैकेट ही रखते हैं ताकि हमें याद रहे बात। सो मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर, अब ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 4 है, सो कैन आई से दैट इट्स बेसिकली मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर बच रहा है डिनोमिनेटर में, ऐसे ही ना। सो कैन आई से इट्स गोइंग टू बी मोल पावर -2 डीएम पावर 6, राइट रॉन्ग? हाँ, 3 to the 6 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। 1/मोल पर डीएम क्यूब में मोल इनवर्स हो जाएगा और डीएम क्यूब पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज मोल पावर -2 डीएम पावर। यू कैन लीव इट एज इट इज, इस तरह भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर टू राइट डाउन इट इन दिस फॉर्म, ठीक है, सॉरी, इन दिस फॉर्म। क्लियर जी? सो दिस वन गेट कैंसल्ड आउट विद दिस, इसका एक कट गया था तो 1/मोल पर डीएम क्यूब। क्लियर? कैन यू प्लीज डू इट फॉर दिस वन एज वेल? 2 SO2 gas plus O2 gas forming 2 SO3 gas.
write down the expression of Kc and calculate its unit. ठीक है, that's the third equation. expression of Kc लिखिए और उसका यूनिट कैलकुलेट कीजिए. This is oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide. Hmm? Which one? Done? Can you please check it? Is it correct? SO3 and gas mud gas. SO3 gas. Done है बेटा? Correct है? ठीक है? Good. So if you are dealing with the equation that include all gases, if you are dealing with the equation that include all liquid, आपको ये काम करना पड़ेगा. ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड की. Equilibrium constant, B part, in terms of pressure. Basically, this is called partial pressure. And this is represented by Kp. And make sure that this is only for gases. You cannot write Kp for liquid. ठीक है? gases के लिए आप Kc लिख सकते हैं, लेकिन Kp आप सिर्फ gases के लिए Kp आप liquids के लिए नहीं लिख सकते. ठीक है? Clear? So it is only for gases. Clear? सबसे पहले थोड़ी सी बात करेंगे बेटा partial pressure की. Have you heard the word partial pressure? देखिए, let's suppose you have like a mixture of gases. ठीक है? In any container, you have three gases: gas A, gas B, gas C. ठीक है? So the pressure exerted by gas A is called the partial pressure of gas A. ठीक है? And this partial pressure is basically depends on how many moles of gas A you have. Means the mole fraction of gas A. यानी total gases में से A, B और C में से A के कितने मोल्स हैं? जितने मोल्स उसके होंगे उतना कंट्रीब्यूशन प्रेशर में उसका होगा. And if you add the partial pressure of all these gases, it must be equal to the total pressure. Clear? So partial pressure is basically the pressure exerted by a gas in a mixture of gases. ठीक है? So let's suppose we have gas A plus gas B plus gas C in a container. ठीक है? टोटल प्रेशर इसका होगा P. Capital P is the total pressure. सही है? So the partial pressure of gas A रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल p with a सबस्क्रिप्ट में A.
ठीक है। एंड टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, you divide the number of moles of gas A with the number of moles of gas A plus number of moles of gas B plus number of moles of gas C. Total number of moles. This is called, इसको हम क्या कहते हैं? This is called mole fraction. Mole fraction. यानी A का कितना contribution. Multiply by total pressure. ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला इट मस्ट क्वाइट क्लियर, जितने ज्यादा ए का मोल फ्रैक्शन होगा टोटल प्रेशर में उतना ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर विल गिव यू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी मस्ट बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर। किसके बराबर होगा? टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है बेटा। So partial pressure is the pressure exerted by any gas in a mixture of gases. Let's suppose we have three gases A, B, and C. The total pressure is P, represented by capital P. The partial pressure of gas A is the mole fraction of gas A multiplied by total pressure. Mole fraction निकालने का तरीका क्या है? Mole of gas A divided by total moles. If I ask you about what should be the partial pressure of gas B, तो क्या फर्क आएगा इस फॉर्मूले में? ऊपर बी हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। गैस सी के लिए ऊपर सी हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एंड टू चेक द आंसर यू हैव टू ऐड ऑल दीज पार्शियल प्रेशर, इट मस्ट गिव यू द टोटल प्रेशर व्हिच इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर? तो पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड राइट डाउन द केस Kp in terms of partial pressure. Let's suppose you have a reaction, moles A 2 moles of A gas plus B gas by a reversible reaction forming 2 moles of C in a gas form plus D is also in a gas form. And if I if I ask you to write down the expression of Kp, now we cannot use the concentration sign. नहीं यूज कर सकते ना, तो हम क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C का स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट ना भी यूज करें तो चलेगा। You can write it down without bracket as well. Partial pressure of gas D divided by the partial pressure of gas A का square, ठीक है, and the partial pressure of gas B, ठीक है। और यहां लिख लें, do not use square bracket, ठीक है। आप ब्रैकेट ना लिखें तो भी चल जाएगा मल्टीप्लाई के साइन के साथ ना। यूनिट ऑफ प्रेशर और पार्शियल प्रेशर क्या यूनिट होते हैं जनाब? कॉमन प्रेशर के पास्कल्स। You can use kilopascal most commonly, and you can use ATMS, atmospheric pressure as well. ठीक है, तो whatever the unit of pressure is, हम वो सारे यूनिट यहाँ यूज कर सकते हैं। So let's suppose we are doing a unit cancellation, and the pressure unit is kPa. क्या गिवन है? kPa है kilopascals में। Can you do the unit cancellation? इसमें तो बहुत आसान है, कुछ नहीं बचेगा। kilopascal का स्क्वायर आपको हर बार भले इट्स नो यूनिट आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डू यूनिट कैंसिलेशन। ठीक है, एंड एवरीथिंग गेट कैंसल्ड आउट, एंड केपी हैज नो यूनिट। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि यूनिट की जगह पे यू हैव टू राइट नो यूनिट। आप जीरो नहीं लिख सकते, क्रॉस नहीं लगा सकते, डैश नहीं लगा सकते। इन वर्डिंग आपको नो यूनिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो कैन यू राइट डाउन द केपी? कैन यू राइट डाउन द केपी एक्सप्रेशन फॉर दिस एग्जाम्पल? H2 गैस प्लस चलें Cl2 गैस कर लेते हैं, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है,
forming 2HI in a gas form. Can you write down the expression of Kp for this one, beta, and find out its unit? Unit तो शायद कोई ना हो. Okay, write down the expression of Kp. Okay, Janab. So it's going to be partial pressure of HI ka square divided by partial pressure of hydrogen into partial pressure of Cl2. Okay? And in the unit cancellation, again, everything get cancelled out because the number of moles on the product side and the reactant side are same. So आप लिखेंगे no unit. ठीक है बेटा, that's how you're going to write down the expression of Kp. Clear है? So if they ask you to write down the expression of Kp in any question, so let's talk about a few. Assalamualaikum, sir. Wait. Okay, beta. So last thing about this is basically the factors that affecting Kc and a Kp. For this one, just remember one-liner statement that the value of Kc and a Kp is only affected by temperature. Okay, the Kc and a Kp value is only affected by temperature, and there's no effect of pressure, no effect of concentration, no effect of catalyst on the value of Kc or Kp. Okay, and one more thing, for all endothermic reactions, Kc or Kp increases as the endothermic reaction required high temperature. So Kc, Kp increases as temperature increases. Okay, in a similar way, for all exothermic reaction, as exo required low temperature, the Kc and Kp value decreases as temperature increases. ठीक है, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि the Kc and a Kp value is only affected by temperature, and it for endothermic reaction Kc Kp increases with temperature. For exothermic reaction Kc and a Kp decreases with temperature. So if you lower the temperature for an exothermic reaction, the Kc Kp value, for an endothermic reaction अगर आप temperature बढ़ाएंगे, so Kc Kp value increase. ठीक है, so delta HR enthalpy change अगर positive है तो Kc Kp value increases as temperature increases. Okay, and the Kc Kp value decreases as temperature decreases. If you have overall exothermic reaction, so the Kc Kp value decreases, कम हो जाएगी, ठीक है, as the temperature increases, or Kc Kp value increases on lowering the temperature because exothermic required lower temperature. ठीक है, so they normally ask
describe and explain the effect of the factor that affect the Kc or a Kp value. So you have to answer it accordingly. Let's see. In this one, you can see this is a question we just did. Yeah, this one. It says the equilibrium for this particular reaction, the reaction is endothermic, contribute to the series of photochemical smoke. Which factor would affect the value of Kp? ठीक है? Effect of pressure, there should be no effect of pressure. Effect of catalyst, there should be no effect of catalyst. Effect of temperature, yes, effect of temperature. तो सारे टिक कहाँ पर आ रहे हैं? The statement D is the correct statement. ठीक है? So whenever there is a question about the value that affect the value of that question about the factor that affect the value of Kc and a Kp, you just have to pick the temperature वाला part. ठीक है? So temperature wala hi is the only answer whenever they ask. And there's one more question. You can see this one. You can see the answer is A. Okay. Sulfur trioxide is manufactured from sulfur dioxide and oxygen in a contact process. Which condition affect the value of Kc? Now, effect of value affect the Kc, temperature, right answer, move forward. So this is about the factor affecting Kc and Kp. So in today's class, we started from here. How to write down the expression of Kc, unit of Kc for gases and liquid, how to write down the expression of Kp with the concept of a partial pressure, which is the mole fraction of any gas multiplied by the total pressure, how to write down the Kp expression, and how to calculate the unit of Kp as well, and the factors that affecting Kc and a Kp. Factors wali baat is quite easier, that you just have to think about the temperature. Temperature is the only thing that affect the value of Kc or Kp. So we're keeping it till here and we will continue it in a next session, inshallah.